पास ओवर नहीं हो पाएगा, योर रिक्वेस्ट इज नॉट जेन्युइन। बहस करिए या इस केस को 4 हफ्ते बढ़ा देते हैं, दो में से जो आपको पसंद हो बता दीजिए। My lord, 4 weeks. हाँ लिखिए। चलिए, नहीं पहले बढ़ चुका है ये, पहले भी बढ़ चुका है आपके सितंबर से बढ़ रहा है। सितंबर से बढ़ रहा है। बता दीजिए क्या है मैटर। Lordship, this is second bail application, Lordship, हाँ। under section 14A of STSC Act, Lordship, जी read with section 439 CRPC, Lordship. जी First bail was withdrawn because DNA report was came positive, Lordship. जी, तो उसके बाद क्या बदल गया? Lordship, various witnesses had been examined, Lordship, हाँ। and from the circumstances of the deposition of witness, it can be said that prosecutrix was consenting parties, Lordship, and she is major, Lordship. बताइएगा कहाँ पर है प्रोसिक्यूट्रिक्स का डिपोजिशन? पेज नंबर 26 है, पेज नंबर 26। 26। क्या कहा उसने वो कंसल्टिंग पार्टी है, देखेंगे। My lords, may come to the para 4 of the डॉक्टर वीरेन ने मुझे उसी समय ये धमकी दिया कि यदि अपने भाई को कोई बात बताई तो मैं जान से मार दूंगा। मेरे भाई के आने पर डॉक्टर वीरेन ने उसको दवा लेने के लिए बाहर मेडिकल स्टोर पर भेज दिया था। जब मेरा भाई दवा लेने चला गया था तो डॉक्टर वीरेन ने उसी दौरान मेरी प्रेगनेंसी चेक किया था और विगत 2 माह से मेरा मासिक धर्म रुका हुआ था। जब मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो मेरा भाई नरेश सरयम दवा लेकर आ गया था। मुझे डॉक्टर वीरेन ने बता दिया था कि जो दवा भाई लेकर आया, ये दवा को लेती रहना और दांत ठीक हो जाएगा। नाउ माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 7, लॉर्डशिप। मैं इस बात से डर गई थी कि यदि आरोपी वीरेन ने किसी को घटना के संबंध में बता दिया तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं उसी के यहाँ दोबारा इलाज करवाने भी गई थी। इससे कंसेंट कैसे मालूम पड़ती है? माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 15 नाउ, लॉर्डशिप। जी। यह सही है कि मैं दिनांक 18/8/21 को अपने भाई नरेश सरयम के साथ डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर खुजली के उपचार के लिए आई थी। मैं दिनांक 18/8/21 के पूर्व भी डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर आई थी, इसलिए जानती थी कि यह क्लिनिक डॉक्टर वीरेन की ही है। यह कहना सही है कि मैं दिनांक 18/8/21 को मेरा भाई नरेश सरयम मुझे क्लिनिक पर छोड़कर चला गया था। यह कहना सही है कि दिनांक 18/8/21 को भी क्लिनिक पर आरोपी डॉक्टर वीरेन ने मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। यह कहना सही है कि दिनांक 18/8/21 को भी डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर मैं 1 घंटे तक रुकी थी। दिनांक 18/8/21 को मेरा भाई सरयम डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर आया तो उसके साथ अपने घर चली गई थी। नाउ माय लॉर्ड्स, में कम टू द नेक्स्ट पैरा। मैं दिनांक 18/8/21 को अपने भाई नरेश सरयम के साथ घर जाकर अपने माता पिता एवं भाई बहनों को दिनांक 18/8/21 को क्लिनिक पर हुई घटना के संबंध में नहीं बताई थी। दिनांक 18/8/21 के बाद मुझे 2 मास तक माहवारी नहीं आई थी। दिनांक 18/8/21 को डॉक्टर साहब ने खुजली के लिए जो मुझे दवा दी थी वह मैं लेती रही थी। स्वतः कहा कि डॉक्टर साहब जब भी देखे थे मुझे 1 माह के लिए दवा दी थी। जब मैं दिनांक 18/8/21 को जब डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर गई थी तो उसे खुजली होने के लिए समस्या बताई थी। उस समय मैंने उसको यह नहीं बताई थी कि मुझे 2 माह से माहवारी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे दिनांक 18/8/21 को डॉक्टर को क्लिनिक पर दिखाने के समय यह आभास नहीं हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब मेरा नेक्स्ट पैरा, जब से मेरा पीरियड प्रारंभ हुआ है तब से मुझे नियमित रूप से प्रत्येक माह पीरियड आता था। मैंने अपने माता पिता एवं भाई बहनों को इससे ये नहीं बताई थी कि मुझे 2 माह से पीरियड नहीं आ रहा है। माय लॉर्ड्स, में कम टू द नेक्स्ट पैरा। डॉक्टर वीरेन ने दिनांक 18 तारीख को हुआ इसका स्टेटमेंट प्रोसिक्यूटर्स का? किस तारीख को हुआ ये स्टेटमेंट? माय लॉर्ड 2/7/2022 को। यस लॉर्डशिप। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कंसेंटिंग है ये? 27/10/22। इसमें कम टू 27/10 है जी सर। माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 10/22 भी है। जी। माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 18। दिनांक 18/8/21 को मेरा भाई डॉक्टर की क्लिनिक पर मुझे छोड़ने के बाद वहां पर वापस लगभग 1 घंटे बाद आया था। यह सही है कि क्लिनिक पर जिस स्थान पर डॉक्टर वीरेन मरीज को देखते थे वहां पर डॉक्टर के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं था। क्लिनिक पर मैंने डॉक्टर वीरेन को अपनी समस्या बताई थी और उन्होंने मेरा उपचार के लिए दवा भी दिया था। डॉक्टर वीरेन ने जिस स्थान पर मुझे खुजली हो रही थी वह स्थान पर कपड़े से हटवाकर उस स्थान को देखा था। डॉक्टर वीरेन ने नेक्स्ट पैरा। डॉक्टर वीरेन ने दिनांक 18/8/21 को क्लिनिक के जिस स्थान पर मेरी बीमारी को देखा था उसी स्थान पर दिनांक 18/11/21 को भी मेरी खुजली को देखा था। डॉक्टर वीरेन ने क्लिनिक पर मेरा शरीर जिस स्थान पर खुजली हो रही थी
वो देखना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें देखने से मना किया था, किंतु उन्होंने कहा कि जब तक बीमारी नहीं देखेंगे तब तक क्या दवा देंगे। मैंने स्वयं अपने कपड़े हटाकर डॉक्टर साहब को खुजली का स्थान दिखाया था। दिनांक 18/8/21 से दिनांक 18/11/2020 मध्य डॉक्टर साहब ने से मोबाइल पर बातचीत नहीं की थी। नेक्स्ट पैरा, दिनांक 18/11/2021 को मेरे साथ डॉक्टर ने लगभग 15 मिनट तक शारीरिक संबंध स्थापित किया था। मैं उस समय 15 मिनट के दौरान कोई विरोध नहीं की थी, शांतचित्त रही थी, क्योंकि उस दौरान मुझे इंजेक्शन लगा रखा था, इससे मैं बेहोश थी। यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 18/8/21 को शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद डॉक्टर वीरेन को यह नहीं बताई थी कि मुझे 2 माह से पीरियड नहीं आ रहा है। डॉक्टर वीरेन ने कहा था कि प्रेगनेंसी नहीं बताई थी, कहाँ पढ़ लिया आपने? पढ़िएगा जरा, ये कहना सही है कि लॉर्डशिप, मैं कम टू द पैरा 20। नहीं, इसको तो सही पढ़ने आप। अभी तो आपकी एडवोकेसी की शुरुआत है, अभी से आप गलत पढ़ने लगेंगे। माय लॉर्ड, व्हिच लाइन लॉर्डशिप? यही जो 4th लाइन, ये कहना सही है कि यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 18/11/2021 को शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद डॉक्टर वीरेन को यह बताई थी कि मुझे 2 आपने नहीं क्यों पढ़ा था फिर? माय ये लॉर्ड, इसीलिए मेरे को आपको टोकना पड़ा। लॉर्डशिप, ये प्रैक्टिस आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगी। माय लॉर्ड, अगर मैंने एक आध ऑब्जर्वेशन कर दिया, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। प्लीज डोंट इंडल्ज इन ऑल दीज टेक्टिक्स। रीड what is written. yes lordship, it was mistake lordship, I am not knowingly reading wrong lordship. माय लॉर्ड्स में कम टू द, यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 18/11/2021 को शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद डॉक्टर वीरेन को यह बताई थी कि मुझे कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं आप? माय लॉर्ड, 4th लाइन ऑफ पैरा 20। हाँ, वो तो हो गया, वो तो पढ़ लिया। यस लॉर्डशिप, डॉक्टर वीरेन ने कहा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट कराना पड़ेगा, तो मैंने उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए मना किया था। डॉक्टर वीरेन ने मुझसे कहा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, क्या होता है? मेरी पेशाब से ही प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मुझे प्रेगनेंसी की जानकारी हुई थी तब मुझे चिंता हुई थी। मैंने डॉक्टर साहब से बोला था कि प्रेगनेंसी नष्ट करने के लिए मुझे दवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने प्रेगनेंसी नष्ट करने के लिए पर्ची पर दवा लिखी थी और मुझे वो दवा लेने के लिए कहा था। मैंने बाहर से दवा खरीद लिया था। माय लॉर्ड्स में कम टू द नेक्स्ट पैरा। यह कहना सही है कि मैंने प्रेगनेंसी को नष्ट करने के लिए दवा खाई थी, जिससे कि प्रेगनेंसी नष्ट हो जाए। दवा खाने से ही मेरा गर्भ नष्ट हो गया था। मुझे मालूम नहीं है कि डॉक्टर वीरेन जन स्वास्थ्य रक्षक है। मैं तो ये जानती हूँ कि आरोपी डॉक्टर वीरेन डॉक्टर है। ये कहना गलत है कि मैंने दिनांक 18/8/21 एवं दिनांक 18/11/2021 को डॉक्टर वीरेन से अपनी इच्छा और सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित की हूँ। यह कहना सही है कि दिनांक 18/8/2021 एवं 18/11/2021 को डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक से निकलने के पश्चात मेडिकल स्टोर वालों एवं शाहजहां बाजार की दुकानों एवं आने जाने व्यक्तियों को तथा रास्ते पर पड़ने वाले शाहगाज पुलिस स्टेशन पर जाकर किसी व्यक्ति को यह नहीं बताई हूँ कि आरोपी डॉक्टर ने क्लिनिक पर मेरे साथ मेरी इच्छा एवं सहमति के बिना बलात्कार किया है। माइलर्स में कम टू नेक्स्ट पैरा 22। यह सही है कि दिनांक 18/8/2021 से 2 माह तक मैंने अपने परिवार वालों को आरोपी डॉक्टर वीरेन द्वारा क्लिनिक पर बलात्कार किए जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई हूँ। दिनांक 18/8/2021 के बाद भी मैं दिनांक 18/11/2021 को अपनी मर्जी से डॉक्टर वीरेन के यहाँ इलाज कराने गई थी। दिनांक 18/8/21 ठीक को है, इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं आप? माय लॉर्ड, शी वाज कंसेंटिंग पार्टी लॉर्डशिप। आपकी क्या रिलेशनशिप थी डॉक्टर की और पेशेंट के साथ में? व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? लॉर्डशिप, it was love affair lordship. अच्छा, And lordship, she never told about anything lordship. Only allegations made when the present applicant himself told the sister of the prosecutrix lordship that the prosecutrix is pregnant. The present case has been labeled lordship. ठीक है। It can be drawn from the statements of brother and sisters of the prosecutrix also. They have also been examined lordship. ठीक है। Lordship, I have कितने गवाह बच गए अब इसमें? pardon lordship. कितने गवाह बच गए? Lordship, I have statements of prosecutrix and her brother and sister lordship PW. उसके बाद कितने गवाह और हो गए? Lordship, I am not aware. कितने गवाह हैं टोटल? टोटल 22 दिखा रहा है सर इसमें। ट्रायल कंप्लीट होने दीजिए, वेट करिए। My lords, I have judgments also where the if circumstances are saying that the prosecutor is consenting, then the bail may be granted. 161, 164 and the chief of the statement clearly stated supported the prosecution. Statement दिखा रहा हूं। FSL and My lord. DNA is also positive.
My lords, we come to 1979 to Supreme Court, page number 143. 1979 To Supreme Court, SCC 143. 1979 to HCC 14 Page number 143, Lordship. 143 लीजिएगा है आपके पास कॉपी लेकर आए हैं क्या Lordship, I have another judgment also of Delhi High Court. I have bring that copy. इसकी कॉपी दी इसको पढ़ दीजिए ना किताब दीजिए कौन सा पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं आप Lordship, that is another judgment, Lordship. इसको छोड़िए इसको सुप्रीम कोर्ट बताइए 1979 टू एससीसी 143 Lordship may come to the para. लेकर आएंगे ये लोग रीडर साहब ये लॉ असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं दो इनको बोलिए ना ये जाके लेकर आएंगे My lords may come to the judgment of Delhi High Court. My lords may come to the जी paragraph 84 to 86, Lordship. जी In order to answer the aforesaid question, it would be necessary to see what the word consent, especially in a relation to sexual activity, connotes. In normal parlance, consent would mean voluntary engagement of a complainant to engage in sexual activity without being abused or exploited by coercive or threats. An obvious ingredients of consent is that as consent could be given, it could be revoked at any time, rather any moment. The sexual consent would be the key factor in defining the sexual assault as any sexual activity without consent would be rape. There is a recent trend of suggesting various models of sexual consent. The traditional and the most accepted model would be affirmative model, meaning thereby that yes and yes and no is no. yes The model will be some difficulty in a universal acceptance of the opposite model of consent. As in certain cases, there can be affirmative consent or in a positive denial, but it may remain underlying dormant, which could lead to confusion in the mind of the other. In an act of passion, actually by libido, there can be myriad circumstances which can surround of a consent, and it may not necessarily always mean yes in a case of yes and or no in case of no. Everyone is aware that individuals vary in relation to exposition their feelings, but what has to be understood is that the basis of any sexual relationship is equality and consent. The normal rule is that the consent has to be given and it cannot be assumed. However, recent studies reveal that in reality, most of the sexual interactions are based on non-verbal communication to indicate the and reciprocate consent. Consent cannot be analyzed without taking into account the gender binary. There are differences between how men and women initiate and reciprocate sexual consent. The normal construct is that man is the initiator of sexual interaction. He performs the sexual part, whereas the woman by and large non-verbal. Thus, gender relations are also sexual consent because man and women are specialized into gender roles, which influence socialized. पढ़ो सही पढ़ो. Thus, gender relations are also influence sexual consent because men and women are socialized into gender roles which influence their perception of sexual relationship and expectations of their specific gender roles with respect to the relationship. However, in today's modern world, the equality being the buzzword, such may not be the situation. Today, it is expected consent be viewed as a clear and unambiguous agreement, expressly outwardly through mutually understandable words and action. Inherence, it is the capacity to withdraw the consent by either party at any point of time. Normally, the body language or non-verbal communication or any previous activity or passivity, and in some cases, incapacitation because of the alcohol consumption may not be taken as a consent. However, in the present case, as the case has been stated, the appellant has not been communicated, or at least it is known whether he has been communicated that there was no consent of the prosecutors. And my lords, in this case, lordship, in MLC report, lordship, there is no external and internal injury, and the prosecutors are habitual to intercourse, lordship, and no definite opinion was given, lordship. Also, the hymen was old and ruptured, lordship. And lordship, and only the case has been leveled after the applicant himself told that the prosecutor is
pregnant lordship to the sister of the prosecutor's lordship, and the sister is also PW3 has been examined and saying this lordship. क्या कह रही है? My lords may come to the para 7 lordship. जी. ये पढ़िए. आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र साहब से मेरा मोबाइल नंबर लिया था और मैंने अपना मोबाइल नंबर आरोपी वीरेंद्र गौर को दिया था. शी इज सिस्टर ऑफ द प्रोसिक्यूटर लॉर्ड. Yes. मेरे मोबाइल और फोन को कभी कभी पीड़िता भी पढ़ाई के उद्देश्य से उपयोग करती थी. मेरे गांव की आरोपी क्लिनिक लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती है. बूंदी से मेरा घर अंदर पड़ता है, इसलिए मेरे गांव से आरोपी वीरेंद्र गौर के क्लिनिक पर जाने के लिए आगमन के लिए लोग वाहन नहीं चलते थे. जब पीड़िता को कोई बीमारी नहीं रहती थी तो वह घटना के पूर्व ही आरोपी वीरेंद्र गौर के क्लिनिक पर उपचार करने के लिए जाती रहती थी. पीड़िता ने मुझे बताया था कि उसके पेट में खुजली की शिकायत है, किंतु मुझे स्पष्ट तौर पर नहीं बताई थी कि उसे कमर के नीचे खुजली की शिकायत है. नेक्स्ट पर पीड़िता को जो खुजली की समस्या थी उसका इलाज करवाने के लिए आरोपी वीरेंद्र गौर के पास ही गई थी. स्वतः कहा कि आरोपी द्वारा किए गए उपचार से पीड़िता की खुजली प्रारंभ में तो ठीक हो गई थी, इसलिए वह पुनः खुजली होने पर आरोपी के पास ही उपचार के लिए गई थी. पीड़िता ने खुजली का उपचार आरोपी वीरेंद्र गौर से ही उसके क्लिनिक पर करवाई थी, अन्य किसी से उपचार करवाने के लिए नहीं गई है. पैरानाइज मेरे और पीड़िता के मध्य बहुत अच्छा तालमेल था और हम एक दूसरे को अपनी समस्या बताते रहते थे. पीड़िता ने मुझे यह नहीं बताई थी कि उसे 2 माह से माहवारी नहीं आ रही. जब आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र गौर ने मुझे फोन करके बताया था कि पीड़िता 2 माह से गर्भवती है तो मुझे उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई थी. यह कहना गलत थी. यस लॉर्डशिप, द पैरा 9 लॉर्डशिप. And the brother is also PW2 is saying the same lordship, that the only allegation leveled after the applicant himself told that the prosecutor is pregnant lordship, and she was a relationship in 18/8/21 lordship, and again in 18/11 that 21 lordship, that is after 2 months lordship. And she in both the time she have not told their family lordship. The applicant himself told lordship, and the case has been initiated by the family members of the prosecutor's lordship. जी. ठीक. Yes. Hello. Page number 26, my lord. Yes. घटना दिनांक 18/11 पैरा 2 स्पेसिफिक स्टेट दैट मान लो. घटना दिनांक 18/11/21 की सुबह 11:30 बजे की शाहगंज की है. घटना दिनांक को मैं अपने भाई नरेश श्रीराम के साथ दांत का इलाज कराने के लिए वीरेंद्र के क्लिनिक पर गई थी और मेरा भाई मुझे क्लिनिक पर छोड़ के काम से सोसाइटी चला गया था. मुझे दांत हुआ था जो कि ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर वीरेंद्र को बताया था. उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा. मैंने इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया था और कहा था कि मेरा भाई आ जाएगा तब इंजेक्शन लगवाऊंगी. डॉक्टर नहीं माना और कहा कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और मुझे मरीज के बेड पर ले जाकर इंजेक्शन लगा दिया. इसके बाद मुझे कोई होश नहीं था. इसके पश्चात मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र ने मेरे साथ जबरदस्ती किया. सेम Shri Dheeraj Tiwari, learned counsel for the applicant. Shri Manaswani Verma, learned government advocate for state. This is second application under section 14-A within bracket 1 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, read with section 439 CRPC. Next slide. Petitioner's contention is that first application was dismissed as was informed that DNA report is positive and therefore petitioner had withdrawn the application. Next one.
It is submitted that thereafter prosecutrix was examined before the trial court on 27/10/2022 and it appears from her deposition that she was a consenting party. Full stop. First incident took place on 18/2021. She was 2 months pregnant when she approached the applicant on 18/11/2021. Full stop. It is submitted that prosecutrix being major and a consenting party, comma, in the light of the decision of Honorable Supreme Court in Tukaram and another versus the state of Maharashtra within bracket 1979 bracket close to SCC 143. It is wherein it is held that offense is to be established by the prosecution मैं इंटरप्ट सॉरी मान लो beyond doubt. ये डेट जो है साहब वो 2/7/2022 ही है. मैंने कहा था आपसे 2/7/22 कर दीजिए. 27/10/22 नहीं है, 2/7/22. Full stop. It is reliance is also placed on the decision of Delhi High Court in Mahmood Faruqi versus State within bracket Government of NCT of Delhi 2017 SCC online Delhi 6378 wherein reading paragraphs 84 to 86. 84 to 86, it is submitted that what is the meaning of the consent and how consent is to be inferred. Full stop. Reading this judgment, it is submitted that since prosecutrix is a consenting party, therefore it is a good case to extend benefit of bail to the applicant. Next, Shri Manasmani Verma, learned counsel for the state, opposes the prayer and submits that consent cannot be adduced from any of the statements given by the prosecutrix, be it under section 161, comma 164 CRPC or before the court. Full stop. It is pointed out that prosecutrix has clearly mentioned that she was given an injection so to make her unconscious and thereafter applicant had performed illegal activity of violating her privacy. Full stop. It is submitted that as per the law, when prosecutrix was not in her senses and was drugged, then it cannot be inferred that she had given her voluntary consent for the establishment of physical relationship. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that in para 86, Delhi High Court has clearly mentioned that incapacitation because of alcohol consumption, comma, may not be taken as consent. Full stop. In the present case, prosecutrix has clearly mentioned that she was given some injection as a result of which she had become unconscious. Full stop. In view of this fact, it cannot be said that prosecutrix had given active consent to the applicant to violate her privacy. Full stop. Thus, judgment rendered by Delhi High Court in Mahmood Faruqi will not be applicable to the facts and circumstances of the present case. Full stop. In case of Tukaram, Supreme Court has held that if trial court after appreciation of evidence records a finding of acquittal, then reversal of acquittal is not justified even if view taken by trial court, even if view taken by trial court was reasonably possible, even though High Court was inclined to take a different view of the facts. Full stop. It is also held that in absence of direct evidence, full stop. In view of such facts, when there is a direct evidence in the form of DNA report pointing out that
applicant is the violator of the privacy of the prosecutrix and consequence is positive DNA report, comma, in the opinion of this court, comma, at this stage, aspect of consent without appreciating the evidence of each and every witness cannot be inferred merely at the suggestion of the learned counsel for the applicant. It's a matter of trial whether there was an active consent of the prosecutrix or not, and it's not required to be seen at the stage of deciding the bail application. Therefore, bail application fails and is dismissed. My lord, one more contention to be recorded, lordship. And the place of incident is lordship is in public lordship, and she never shouted or not resisted lordship. लिखिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा. It is submitted by Shri Dheeraj Tiwari that place of incident is the clinic of the doctor, which is a public place, comma, the prosecutrix neither shouted nor called for any help in the public place. ठीक है, तो इसका जवाब भी लिख लीजिएगा. That prosecutrix was drugged, she was threatened, and she comes from an underprivileged family. अनकॉन्शियस भी थी, अनकॉन्शियस थी ना. And since she was unconscious, her active consent cannot be deduced merely on the suggestion of the counsel for the applicant. चलिए. Serial number 2, Kiran Agrawal, Helen Verma. Lordship, I'm praying for a pass away. Lordship, Senior Advocate Mr. Anilkar is held up before another court. ठीक है, लिखिए. श्री पहले कितनी बार बढ़ चुका है ये? One time, once, Your Lordship. इसको फिर बढ़ा देते हैं. लिखिएगा श्री. आपका शुभ नाम बताइए. AJ Matthew, Your Lordship. AJ Matthew. AJ Matthew submits that arguing counsel is not available. He's busy somewhere else. Case is adjourned. List after 4 weeks. Your Lordship, if after 1 week, Your Lordship, this has already. यहाँ पर ऑब्जेक्टर हाँ, इनका नाम डाल दीजिएगा. संजय कुसुम. Serial number 3, Obliged. Siddharth Dutt. Lordship, I'm praying for next week because this matter to be specifically argued as senior counsel, lordship, as passover is not possible today, lordship. कितनी बार बढ़ चुका है पहले ये? Lordship, one time. 11/1/23 को भी आपने टाइम दिया था. लिखिएगा. Today again learned counsel prays for time. Case is adjourned. List after 3 weeks. Serial number 4, Mukesh Kumar Srivastava. लॉर्डशिप प्रेज फॉर 1 वीक्स टाइम. पहले कितनी बार टाइम ले चुके हैं? एक ही बार लॉर्डशिप इसके बाद. एक बार ले चुके हैं ना. लिखिएगा श्री. ना इतना आपका शुभ नाम बताइए. हेमंत पटेरिया. Hemen Pateria again prays for time. Case is adjourned. List after 3 weeks. Serial number 5, In this case, I am appearing on behalf of Shri Anshul Tiwari, my lords. My lords, it may be taken up in the next week, my lords. Certain deposition has been approved. कितनी बार पहले पहली बार But, लगाए? No, पहले भी time for ले the चुके हैं ना? second time, my हाँ, lord. It is लिखिएगा prays for इनका श्री पवार prays for time. Case is adjourned. List after 3 weeks. serial number 6, Manoj Kumar Mishra. लॉर्ड आई एम प्रेइंग फॉर नेक्स्ट वीक लॉर्डशिप. कितनी बार बढ़ चुका है? लॉर्डशिप पिछली बार कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाए थे तो एक ही बार बढ़ा. Again prays for time. List after 3 weeks. Serial number 7, Vijesh Upadhyay. Lordship, on the last date of hearing, Ansuman Swami. called for the Commissioner of Municipal Corporation to answer the question. Lordship, with regard Is he to, available? Lordship, we have filed an application for recalling of order as well as application for exemption. If I may be permitted to हाँ बताइए. argue on those applications. बताइए. Lordship. Lordship, actually, Lordship, previously Why also, your commissioner was called? Lordship, to answer whether the petitioner Lordship was. हाँ, ये क्या recruitment rules कहाँ है? Lordship. Firstly, Lordship, if I may permit it, that on previous round of litigation, this was already adjudicated upon by this honorable court, Lordship, and the आपको issue पहले was बताना चाहिए था. अभी तो बताइए. Recalling application Lordship. ground पे लगाई है. on the actually on the previous date we had in our reply we had not stated these facts, but now Lordship we have brought these facts on record by way of additional return. Additional return आप बिगर अनुमति के कैसे फाइल कर देंगे? How Lordship, can you file additional return without permission of the court?
In our applications also, we have stated this fact Lordship, that this What? has already been adjudicated. If your Lordship may permit me, Lordship, if your Lordship may peruse the order passing contempt petition, the issue was already closed, your Lordship, and the No, we are not interested in whether issue was closed or not. What is the provision in the recruitment rules which were operating on the date when this case was considered? इतना बता दीजिए आप तो। आपके Lordship. कमिश्नर साहब बहुत बड़े आदमी है, नहीं आ सकते, No, समझते हैं हम। Lordship, that Lordship, if I may. नहीं, Page आप number मुझे सिर्फ इतना 20. बता दीजिए बस। This is the only query, you answer it or call him at 2:15. Lordship, we have annexed the Lordship 2015 Gazette 2015 notification. रूल्स पे थोड़ा होगा Lordship, केस कवर्ड। the post of अगर आपको बेसिक ही नहीं मालूम है, 2004 का मुकदमा 2015 के रूल से तोड़ना होगा। आपने कब प्रमोशन दिया था इनको? Lordship, 2003. 2003 में क्या नियम था? Lordship, the rules. Where are the rules? Lordship, if Lordship may peruse the order, Lordship. I'm not interested in perusing the order. On the last date, I asked you to show Okay. from the rules that promotion from a class 4 post to a class 4 post is the prescribed channel of promotion in the recruitment rules. You bring the recruitment rules and show it. Otherwise, ask your commissioner to remain present. Lordship, with regard to the recruitment rules, since these posts have already been abolished since 2015. We are not concerned whether they have been abolished after his promotion. What were the rules? What were the rules obtaining on that date when his case for promotion was considered? Have you brought those rules on record? That has already been observed, Lordship, in the order. I'm not concerned with the observation. I'm asking you, where are those rules? Those rules are not, Lordship, not available because since these Why? posts have already been abolished, therefore the If posts are abolished, then rules are also. Lordship, no records of with regard to these posts are available, Lordship. That is why. Then who is that is the responsible dilemma. for it? बताइए आपने कब weed out किया रिकॉर्ड को और कैसे किया, किस अथॉरिटी से किया, बताइएगा। Lordship, your Lordship may peruse page number 21 of the petition, Lordship. The order passing contempt petition, this Honorable Court has already observed that the promotion was in accordance with rules, Lordship. That the promotion given to the petitioner was in accordance with rules. Lordship, that page number 21 of the respondents has filed a reply in paragraph number 9. The respondents has categorically stated that persons working in class 4 are first required to be promoted to the immediate next higher pay scale of rupees so and so, and they cannot be straightway promoted to the post carrying pay scale of this. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप तो फिर प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स को क्यों प्रमोट किया, अन्य लोगों को क्यों प्रमोट किया गया था? Lordship, That promotion order is also on record. Lordship, earlier, Lordship, नियम बताइए, देखिए, I'll not go by this. This may be an obiter, this may be an observation. Where are the rules under which promotion was with regard to that private respondent, with regard to the other Lordship similarly placed employees, Lordship, they were promoted, although the petitioner Lordship, he was kept under the general category. So his we are zone not of concerned with the consideration. category. You are mixing the issues, Mr. Swami. Lordship, There are two different issues. Lordship. Here, before the court, you said that that is the normal channel of promotion from class 4 to a higher post of class 4. Whereas in case of private individuals, you promoted them from class 4 to class 3. So now the controversy is to be answered in terms of the recruitment rules which you are obtaining at the relevant point of time. Now please show from the recruitment rules what was the channel of promotion prescribed for a class 4 employee. If you can show it, it is fine. Otherwise, call your commissioner. Lordship, if I may, Lordship, since 2001, these rules have been amended, Lordship, and when was his case for promotion was considered? Lordship, in the year 2000, his case was not considered because, Lordship, according to the petitioner, he was a scheduled tribe person, but he had not annexed any document before the corporation to show that he was a scheduled tribe person. He was kept under the general cat. All these have been observed, Lordship, in the order passing that petition. That is fine. So, Lordship, it was directed. When was he promoted? But in the year 2003. 2003 में आपने किस नियम के अंतर्गत उसको पदोन्नति दी थी, इतना बता दीजिए बस। Lordship, since then, Lordship, amendment has been made, Lordship, in the year 2001. The post on which the petitioner is claiming promotion, it is a direct recruitment post, Lordship, completely 2001 का recruitment rule कहाँ है बताइए? Lordship, that we have annexed in our additional return, Lordship, annexure. Annexure R2 of our additional return, Lordship. हाँ जी बताइए। Lordship, here, Lordship, page number schedule 2 is the Lordship qualifications for direct recruitment. It is it starts from page number 11. किस तारीख से ये rule? Lordship, since from 2001, Lordship, that has been mentioned 9/2/2001. हाँ, कहाँ है इनकी post? Lordship, this assistant grade 3. Schedule 2 is the qualifications for direct recruitment.
And here, Lordship, page number 13 at serial number 33. जी The addition assistant grade 3, Your Lordship, these are the qualifications for the post that are उसमें क्या लिखा only हुआ for direct recruitment. एज प्रिस्क्राइब्ड बाय चैनल क्या दिया है कि ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट हो गई कहाँ मालूम पड़ेगा Lordship, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की Schedule 1 is the Lordship, Schedule 1 the दिखाइए post, Your Lordship. उसमें क्या लिखा है शेड्यूल 1 में दिखाइए असिस्टेंट ग्रेड 3 की सारी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हो गई इतना दिखा दीजिए बस Lordship, with due Lordship, and it is mentioned at page number 57. No, 57. Sorry, serial number 57, page 10. No, although the only word is assistant grade, Lordship, it is actually assistant grade 3. हाँ लिखा है Lordship, serial number 57, page 10. These are the schedule 1. असिस्टेंट ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 2 दिया हुआ है As serial number 38 and 41, then Lordship at 57 it is assistant grade 3. Lordship, due to some misprint, Lordship, this the third is not mentioned. The rules are also under rules of Lordship. Lordship may peruse the rules as on date. There also, Lordship, the post of assistant grade 3 is a direct recruitment post. 75%. 100% प्रमोशन लिखा है आप ये तो सही पढ़ नहीं रहे ये आपने डॉक्यूमेंट इन्हीं के डॉक्यूमेंट के R3 देख लें ये इनके आर्गुमेंट के कॉन्ट्रेरी डॉक्यूमेंट R3 इन्हीं का 15 नंबर देख लें Lordship, 100%. 15 नंबर देख लें ये कह रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है और ये प्रमोशन दे रहा था R3 पेज नंबर 15 देख लें Lordship, इसका इसी रिटर्न इसी एडिशन इसी के साथ 15 नंबर 6/2014 का ऑर्डर है हाँ। चतुर्थ श्रेणी में पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त सहायक ग्रेड 3 के पद वेतनमान 100 पर निम्न पदों का दिन प्रोन्नत किया जाता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये देखें सर ये नोटिस राइटर को भी किया है भक्त को भी किया है हाका गैंग को भी किया है जी जी तो हमारा भी केस यही है कि हमको इन्हें नोटिस राइटर पर पद पर प्रमोट कर दिया है अभी बाद में भी ये क्या कर रहे हैं नोटिस राइटर को भी ग्रेड 3 पे कर रहे हैं और हाका गैंग को ग्रेड 3 पे कर रहे हैं अच्छा आपके कमिश्नर आज आ क्यों नहीं पाए क्या एग्जामिशन एप्लीकेशन में क्या लिखा है आपने वो तो उस दिन का रीजन दिया था आज का तो कोई रीजन दिया ही नहीं आज क्या रीजन दिया है आज का तो कोई रीजन है आज का तो आवेदन ही नहीं डाला Lordship, since 2001 amendments have been made and therefore now he is not Lordship, required to come Lordship, no, Lordship, then 75% is by way of direct recruitment and 25% is by way of promotion. Therefore, he was duly promoted in their 2014 Mr. Council annexure R3. don't try to mislead Lordship, I'm not. you are going to be in problem Lordship, please show me the recruitment rules Lordship, which were in operation when his case for promotion was considered in 2003 that is at Lordship and annexure R2, page number 6. These were the rules that were R2. operational, Lordship. And R2 along with your return these are the additional 2001 return, rules now please show where is the post of assistant grade 3 Lordship. showing that appointment to the post of assistant grade 3 will be sent percent by direct recruitment Lordship, please show me that schedule 1, Lordship, the Schedule name 1, of the yes. post and Page by 10. direct recruitment, Lordship. where is it mentioned आप फिर गलत पढ़ रहे हैं Lordship, फिर गलत पढ़ रहे हैं आप Lordship, serial number 57, it is 100% by way of direct recruitment, Lordship. Column number 1, assistant grade तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई Lordship, assistant grade लिखा है, वो 3 नहीं लिखा, Lordship, क्यों because नहीं वो लिखा है? misprint है, वो Lordship, that is a नहीं आप misprint. ओरिजिनल रिकॉर्ड ओरिजिनल लेकर आइए नियम Original, जहाँ से आपने टाइप किया है वो ओरिजिनल नियम लेकर आइए original rules have been, Lordship, as on date, Lordship, it is 75% direct recruitment, I'm not concerned with as on date I'm concerned with the recruitment rules which were obtaining in the year 2001 Lordship. please bring the original copy देखिएगा श्री अंशुमन I'll स्वामी bring is the original directed to place on record original copy of the rules of the year 2001 Lordship. नहीं सॉरी 2001 नहीं original copy of the rules namely Madhya Pradesh municipal corporations within bracket appointment and conditions of service of officers and servants rules 2000 to show that post of assistant grade 3 was to be filled up 100% by direct recruitment and therefore there was no promotion channel available for the petitioner. Let rules be brought on record. Next para. Considered IA 543 of 2023 an application seeking exemption from personal presence. Full stop. The only ground on which exemption is sought is that the additional return is filed. Full stop.
along with the additional return. A typed copy of the rules of 2000 is annexed. Original copy is not annexed. It was incumbent upon the respondent to have produced the original Gazette notification showing the actual position, because Sri Swami's submission that in Schedule 1 at serial number 57, assistant grade is to be read as assistant grade 3 is not made out. Let complete set of the copy of the relevant rules be brought on record, along with an explanation that when similarly situated persons were promoted, इनका promotion कब हुआ है? 2003 सिमिलर सिचुएशन 2002 में हैं? 2002 में Were promoted in 2002. Then when there was no 410-2000. Huh? 2000 Lordship. 410-2000. Lordship. 410-2000. Then why these rules were not made applicable? ये कब से आए हैं फोर्स में? Lordship, since 9/2/2001. कहाँ है प्रमोशन ऑर्डर? कहाँ है आपके इनका? P2 जो हुआ था, उसकी डेट क्या है P2 की? P2 की डेट है 4/10/2000. 4/10/2000 और हमारा जो प्रमोशन है वो That 2003 has already been adjudicated upon in the previous round of ठीक है, please litigation. forget about previous round of litigation. Lordship, that Let copy of the original rules be brought on record by next date. List on 24 January 2023. That's the last date. My lord also ask the query whether what is the channel of the promotion of the Haka King. That has also not been replied in the additional we have reply. Let reply be also huh? Lordship, that उसमें हाका गैंग का क्या पोस्ट है ये कहीं नहीं दिया है इनने रिप्लाई में Let पूरे reply be also filed that what is the prescribed channel of promotion for a person holding the post of Haka Gang. also, it may also be recorded that this, since 2015 these posts have already been No. so उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो जो चीज देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं, आप मिसगाइड थोड़ा ना कर सकते हैं कोर्ट को. not trying to ले आइए 24 तारीख को. my that personal presence Lordship that may be exempted Lordship if rules are not brought then हाँ ठीक है, पहले तो रूल्स ले आइए. अभी Lordship. तो कुछ कहा ही नहीं. Lordship. सीरियल नंबर 8 श्री राजीव कुमार पांडे श्रीमती असगरी खान जी बताइए. क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड पेश किया था हाँ. क्लेम केस हाँ, गाड़ी का डिस्प्यूट है 665 है कि 655 है? आपकी एफआईआर कहती है 6. FIR है वो MP04P0665 एफआईआर FIR जी और जब्ती भी इसी गाड़ी की हुई. जी. जब्ती जो है हाँ इसी गाड़ी की हुई है. इसलिए हमने जो आगे पेश किया है इसमें जी. एफआईआर 665 की है. यस पेज नंबर एफआईआर इज एग्जिबिट 665 की है. ठीक है. MP04V है ये. 04V0665. जी. ठीक है. और ये एफआईआर हो गई. ये जब्ती है पेज नंबर 18 में. हाँ पेज नंबर 17 में इसमें एक कार सफेद रंग की नंबर MP04V665 घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त हालत में जब्त की गई. जी. Lordship, जी. as per plaint, they have pleaded vehicle number MP04V
0655. And they have also adduced the evidence of सेम पिटीशन में देखते हैं 655 का 6 particular form. यही बात उन्होंने अपने एविडेंस में भी कही है। टाइपिंग मिस्टेक, जी एविडेंस टाइपिंग मिस्टेक मैंने। टाइपिंग मिस्टेक। तो क्या 665 का भी मालिक यही है क्या? नो मैंने, है उसका हमें मालूम नहीं है। तो फिर 655 क्यों लिखा आपने जब एफआईआर में एफआईआर में आप 665 के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं? मतलब टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक से तो मालिक बदल जाएगा गाड़ी का, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा। टाइपिंग मिस्टेक से आप ये लाभ कैसे ले सकते हैं? जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि 665 का इंश्योरेंस नहीं है, आपने गाड़ी का नंबर बदल दिया, 655 कर दिया। मतलब एफआईआर में इनका पूरी स्टोरी में इनका नाम है मनोज कुशलानी, जो अभी यहाँ थे मेजर। ये एफआईआर की काफी मतलब पेज नंबर गाड़ी का नाम नंबर बताइए ना, आपने गाड़ी का नंबर क्या लिखा है? 665 लिखा है, सफेद रंग की कार जिसका नंबर 66 MP04V 665। एफआईआर में आप ये लिख रहे हैं, क्लेम आप लगा रहे हैं, कार भी यही जब्त हो रही है, ठीक है? इसी कार से एक्सीडेंट हुआ है, ये एफआईआर में फिर आपने फिर क्लेम 655 के अगेंस्ट क्यों लगाया? मिस्टेक है, तो फिर मिस्टेक हो गई। तो उस मिस्टेक का कैसे यहाँ पर वो होगा? जिस व्यक्ति के खिलाफ क्लेम नहीं है उसके खिलाफ क्लेम कैसे दिला दिया जाएगा आपको? बताइए, आप ही को बताना पड़ेगा ना। ये एफआईआर की जो कॉपी है, इसमें पीछे जो घटना लिखी है, तो उससे गाड़ी का नंबर बदलने से वो घटना मान ली जाएगी? आपके साथ एक दुर्घटना होती है एक्स वाहन से, आप एफआईआर दर्ज कराते हैं एक्स वाहन के खिलाफ, क्या आप वाई वाहन के खिलाफ क्लेम लेने के लिए ऑथराइज्ड है? इतना सा बिंदु है। तो मैं हमारा कहना यह है कि इसी गाड़ी से जो एफआईआर में नंबर है, इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और घटना का विवरण है इसमें कि जो पांडे जी, या तो आप समझना नहीं चाहते, आपका कहना यही है ना कि 665 से एक्सीडेंट हुआ था, यही कह रहे हैं ना? जब्ती किस गाड़ी की हुई? इसी गाड़ी की 66/5 की, यस मैम 665 की। जी। तो फिर क्लेम 655 के अगेंस्ट कैसे मेंटेनेबल होगा, इतना बता दीजिए। और ज्यादा टाइम मत लीजिए, अगर 1 मिनट में बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो उसको टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आपने फिर वहां पर एविडेंस में जाकर कहा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे जो है इसको अमेंड करके 665 के ओनर ड्राइवर को वो बनाने, पार्टी बनाने का अनुमति दी जाए। डिड यू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट? एविडेंस भी उसी के खिलाफ। ठीक है, पढ़ लिया मैंने। रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। नहीं, अभी तक आप क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड तो ये देखिए ना, ये लीजिए रिकॉर्ड दिखाइए था आपको। वो तो हमने देखा हुआ है। फिर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड, दिखा दीजिए, रिकॉर्ड दिखा दीजिए। फाइल्ड बाय द क्लेमेंट बीइंग एग्रीव्ड ऑफ अवार्ड डेटेड 25 4 and 1 25/4/2009 passed by learned 6th additional motor accident claims tribunal Bhopal in MCC number 1650/2007 Manoj Kumar Kushlani versus Inamur Rahman and others, whereby learned claims tribunal has rejected the claim petition on the ground that FIR was lodged against vehicle bearing registration number MP04V 0665. Said vehicle was confiscated, but claim is filed against vehicle number MP04V 0655. Full stop. Next paragraph. Shri Rajendra Pandey, learned counsel for the appellant, in his turn submits that
Due to typographical error, claim was filed against the owner driver of vehicle bearing registration number MP04V655, whereas in fact accident had taken place with vehicle bearing registration number MP04V665. Full stop. However, there is no explanation on behalf of the appellant that why he had not moved an application seeking amendment in the claim and impleading the actual offender, that is the owner driver of the vehicle bearing registration number MP04V665. Full stop. Thus, when the award is examined on this touchstone, it is evident that claimant is trying to seek compensation from some party which was not responsible for the accident by filing a claim petition, so to save the owner driver of the actual offender bearing registration number MP04V0665. Such claim petition where accident takes place with X vehicle and claim is filed against Y vehicle is clearly not maintainable, and therefore tribunal has not erred in rejecting the claim. Full stop. Appeal fails and is dismissed. The court of the tribunal be sent back. Serial number 9. श्री के गौतम अपने गांव में बट पहले ये 5/12/2018 में डिसमिस हो गई थी, उसके बाद रिट अपील हुई, उसके बाद दोबारा रिट अपील जी 5/12/2018 में फाइनल ऑर्डर इसमें पास हो गया था। मांग रहे हैं सर ये पेंशन बेनिफिट का मैटर क्या है? मैटर मतलब पिटीशन अपॉइंटेड एज कंटिजेंसी पेड एम्प्लॉय एस्टैब्लिशमेंट रूल्स। इन्होंने मतलब ये 92 का सर्कुलर को चैलेंज नहीं किया अपनी पिटीशन। None for the petitioner. Readings complete है पजामा वगैरह? Readings are complete. As nobody is appearing for the petitioner, petition is admitted. Petitioner is already admitted for final hearing. List for final hearing as per his turn and seniority. IA 11355 of 2022. An application for appropriate directions is thus disposed of. serial number 10 श्री अमित मिश्रा श्रीमती पी एस श्रीवास्तव Your Lordship, the 17 Last date of order has been complied with, sir. No, Your Lordship, it has not. It has been been. It has been. No. There is the So I've received the copy in the morning, sir. It can be perused. मैडम को दिखाइए. Up to December 2023, the amount has been paid. December 23. Lordship, because January 23 cannot be paid because audit objection was there. ठीक है. December 22 बोलिए ना फिर. December 22. I'm really sir. December 22 का पे कर दिया. Yes, sir. Your Lordship, my client is available here. He's told me that has not. दिखाइए के कागज दिखाइए क्या है ये. And the second page up to December
serial number 11, series of Singh. I'm highly obliged. Serial number 12. And 12.1. Pradeep Singh Chauhan. Sanjay Pandey. The present petition is arises out of the order of learned 14th additional district judge, Malad, where the petition has been dismissed, Malad. The application has been dismissed under the section of 91 CRPC, Malad. जी बताइए क्या है? Malad, in this petition, Where is the order? First show the application under section 91 and then the order. Malad. Malad, the petition is A2, Malad. The copy of जी A2, Malad, 9 to 10, page number 9 to 10, Malad. जी The order is 9 to 10, Malad, and the application is, Malad, on the page number 6.